ज्योति स्टेनो टाइपिंग कॉलेज में आप सभी का स्वागत है बच्चों। जो बच्चे बिल्कुल शुरू से पढ़ना चाहते हैं, यानी कि जो शॉर्ट हैंड बिल्कुल नहीं जानते हैं और बिल्कुल जैसे शॉर्ट हैंड बेसिक से लेकर के और डिक्टेशन जो है डिपार्टमेंट में बोली जाती है, यानी पिटमेंट पॉकेट बुक से लेकर डिक्टेशन तक पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट है ज्योति स्टेनो टाइपिंग कॉलेज.com। इस वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर कोर्स अवेलेबल है इंग्लिश स्टेनो बेसिक टू गवर्नमेंट जॉब। वहाँ उसमें जैसे मतलब ये सारी कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसमें आप आरपीसी पिटमेंट पॉकेट बुक कंप्लीट बुक, उससे ये पिटमेंट पॉकेट बुक पढ़ सकते हैं। उसमें हर एक्सरसाइज का हल कर रखा है, उसमें सॉफ्टवेयर भी दे रखा है जिसमें आप टाइपिंग भी कर सकते हैं और अपनी एक्यूरेसी को जान सकते हैं। उसमें जिस तरह से बताया गया हर लेसन को कम से कम 10 बार रिपीट करना है, लिखना है, पढ़ना है, टाइप करना है, जिससे मतलब भी आपकी जो आउटलाइंस हैं और जो पढ़ने की क्षमता वो बढ़ती जाए। तो उसको उसी हिसाब से करना है, जिससे मतलब भी जब अब आप डिक्टेशन में आओगे तो आउटलाइन पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। जो बच्चे डिक्टेशन में हैं और डिक्टेशन लिखना चाहते हैं, जैसे कैलाश चंद्रा की डिक्टेशन है, डॉक्टर जी बेस्ट की डिक्टेशन है या एसएससी स्पेशल डिक्टेशन है, तो एसएससी स्पेशल डिक्टेशन पहले से रिकॉर्डेड है, डॉक्टर जी बेस्ट की भी डिक्टेशन पहले से रिकॉर्डेड है और कैलाश चंद्रा की डिक्टेशन अभी रिकॉर्ड की जा रही हैं। 68 तक जैसे पहले रिकॉर्ड हो रखी है और ये कैलाश चंद्रा डिक्टेशन नंबर 69 में पढ़ने जा रहा हूँ और वेबसाइट पे लगा भी रखी है, वहाँ जाकर इसको आप बाद में टाइप कर सकते हैं, अपनी एक्यूरेसी जान सकते हैं, स्पेलिंग एरर, टाइपिंग एरर और आउटलाइन एरर, ये सॉफ्टवेयर वो आपको ऑनलाइन ही वेबसाइट के ऊपर आपको बता देगा, जिससे आप अपनी एक्यूरेसी को सुधार सकते हैं। तो डिक्टेशन में पढ़ने जा रहा हूँ। डिक्टेशन स्टार्ट आफ्टर 5 सेकेंड। Mr. Deputy Chairman, I thought I should rise to support the point put forward by the Honorable Mr. Kunjuru, but my honorable friend from Hyderabad has said certain things which I had better deal with first. He has attacked more or less the whole system of elections in India. He has talked of indirect election and so on. I am afraid he has gone far beyond the scope of the bill, and I do not think that needs an answer at all. As regards the question of preparing electoral rolls, I think there is ample power vested in the Election Commission to order the preparation of a regular electoral roll if the Election Commission considers it necessary for any extraordinary reasons, such as a large exodus from one place to another and things of that kind. Otherwise, as the honorable member himself said, it is such a vast country and such huge numbers are involved that I think it would be really an unnecessary burden on the resources of the state to launch upon the preparation of electoral rolls every year. The same purpose could be served by revising the electoral rolls every year as per the directions given by the Election Commission, as well as the rules laid down for the purpose. In a democracy, one of the prerequisites for its success is vigilance, and I think it would be quite in order to expect the people of various parties to interest themselves in the revision of these electoral rolls. In fact, that is an obligatory task of the citizens, and it only helps to greater awareness and alertness on the part of the different parties. There was another point made by my honorable friend to which I should like to refer. He referred to false personation. I am not going to deny it absolutely. There might have been some false personation, but to say that it was the Congress that resorted
to false personation, and that all other parties were paragons of virtue and were angels dropped from heaven is simply absurd. That he should have had the boldness to venture such a reckless statement, I should say irresponsible statement without any proof whatever, was wholly unfair on his part to the Congress, and it is no credit to this august House that one of its members should make such an allegation against the opposition parties. Sir, my purpose is more to appreciate the stand taken by my honorable friend Sri Kunjuru. I do not know, it is for the honorable minister to say whether even now, as the clause stands, it would not be open to the chief electoral officer made in appeal against an order of the electoral officer made in appeal against an order of the electoral registration officer. I have an idea that the election commission is supreme in these matters, that even when there is an appeal from the electoral registration officer to the chief electoral officer and the chief electoral officer passes an order, though it may be final in the ordinary sense, it does not preclude the election commission from revising that order. I would like to be enlightened on this point. If the honorable minister in charge of the bill says that the order in appeal of the chief electoral officer over an order of the electoral registration officer is final and it is not open to the election commission to set it right, then I beg humbly to differ from such a stand, and I think that is a lacuna which should be made up. So, I would like the honorable minister to apply his mind to this aspect and see that in no case the supreme authority of the election commission in this matter, which is of vital importance, is in the least abridged or curtailed. I think a slight amendment to clause 23 would set right the whole matter. There is only one other remark which I wish to make before I conclude, and that is with regard to clause 25 on page 8. It enjoins on every local authority an obligation to make available to the electoral registration officer such staff as may be necessary for the performance of any duties in connection with the preparation and revision of electoral rolls. Well, with the knowledge that we have to these local authority may fail to make available to the electoral registration officer the staff that he wants. Now, what is the remedy if the local authority does not meet that obligation, if it does not choose to make available the requisite staff that has not been provided for in the bill? It is open to the honorable minister to devise some means to meet such a contingency, but I think a clause like this would be very helpful. That will be some kind of an inducement of the local authority to provide the staff. That is all that I have got to say, and I will no longer tire the house. वेबसाइट पे इस डिक्टेशन को लगा दिया गया है। वेबसाइट का नाम है jyoti.stenotypingcollege.com। वहाँ जाकर के आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। एडमिशन फॉर गवर्नमेंट जॉब ओनली का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टेनो कोर्स में जाइए। मंथली या ईयरली जो भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो लीजिए, और जैसे मतलब बेसिक से पढ़ना बेसिक से पढ़िए। और जो डिक्टेशन वाले हैं वहाँ जो है केसी के नाम से फ़ोल्डर होगा, उसमें केसी डिक्टेशन नंबर 69 होगी,
सबसे पहले ऊपर वीडियो है, उसके नीचे उसका PDF है, उसके नीचे ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर है। वहाँ पर आपको जाकर के इसको टाइप करना है। माई प्रोफाइल में आपका रोल नंबर होता है, जो रोल नंबर आपको बीच में डालना होता है, कन्फर्म करके सबमिट करना होता है और फिर आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप उसको जैसे टाइप कर दोगे फिर आपका उसका रिज़ल्ट बनता है। रिज़ल्ट का आप PDF भी निकाल सकते हो, प्रिंट भी एज ए PDF सेव कर सकते हो, प्रिंट भी निकाल सकते हो, जो भी आप चाहो उस तरह से अपने रिकॉर्ड को रख सकते हो, जिससे आप आगे जो भी उसमें गलतियाँ हुई हैं उनको देख करके अपनी एक्यूरेसी को सुधार सकते हो। इस क्लास के अंदर इतना ही बच्चों। नमस्कार बच्चों।